going to tell you will leave you shocked. Any parent who has a school-going child, or rather a daughter, this should be a wake-up call. Discipline definitely is a part of education. It's an integral part of character building and personality development. But what if punishment humiliates students and strips young women of their dignity in the name of the same discipline? Why are we saying this? Because the story that we are now going to tell you about is a story about a similar such incident. 2 days ago, at a private school in Jharkhand, as a punishment, close to 100 young students, female students mind you, were allegedly asked to remove their shirts by their school principal. You heard it right. On the 9th of January, close to 100 students of class 10, these are students of a private school, they were celebrating what they playfully call Pen Day. It's an annual celebration for these students on the last day of their exams, where they scribble something as a farewell message on each other's shirts. These celebrations, including the students wishing each other by signing and writing wishes on each other's shirts, are part of their uniform. Now this reportedly angered the school's principal, who allegedly punished the students by asking them, believe it or not, to remove their shirts. Sources reveal that these students, close to 100 girls, young girls, were sent back home only in their blazers. This enraged the parents of the students. They reached the school immediately. They confronted the school administration. They were fuming over what their daughters had to go through, and the parents are demanding answers from the principal. They're asking, why hasn't action been taken yet? They're calling for nothing less than an arrest. उन्होंने बोला हम लोग एक्शन लेंगे, ये इलीगल था। बच्चे पहली बात है, यहाँ तो ऐसा कोई गलती नहीं, और अगर बच्ची गलती भी करते हैं तो भी आप शर्ट कपड़े उतरवाने का राइट किसी को नहीं। यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स को नहीं है कि अगर बच्चे इजाजत नहीं दे रहे तो आप कपड़े उतार दें। तो ये तो एक स्कूल की टीचर है, वो भी मेल स्टाफ के सामने, और यहाँ तक कि आप लोग बच्चे के बिना परमिशन के बॉडी टच तक कर दी। बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग को कन्वीनियंट फील नहीं हो रहा, आप लोग ऐसा मत कीजिए, उसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो इलीगल है। स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं है क्या? कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के? रिपोर्ट में वो लास्ट डे में पेन डे का खेलते हैं बच्चे लोग, शर्ट में लिखते हैं, तो पेन डे का कार्यक्रम बच्चों ने किया। उसके बाद प्रिंसिपल महोदया का आदेश आया कि भाई जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। आप बताइए, 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिए और बोलते ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। अगर संवेदना है ना तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से, कि आपने जस्टिस नहीं किया अपने पद को। Can you imagine the trauma of the parents? Can you imagine the trauma of those 16-year-old girls who came to school? You know, they wanted to celebrate possibly the last day of school. They were signing on each other's shirts. And can you imagine the kind of punishment they were given? Now, this principal was confronted. She was confronted by the parents, and she outrightly denied the charges. She said she never asked any student to remove their shirts. And she also maintained that these allegations against her were false. For now, it's the parents who are angry, who are demanding accountability, demanding action. The principal is vehemently denying any such charges that have been leveled against her. I did not do all those things, and neither did I ask them to open the shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here, that's all. What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. Now, district administration officials rushed to the school as tension grew. There were parents who were fuming
There were parents who were seeking action, and like we told you, parents said that, do our young girls not have any dignity? Do our families not have any respect? How can young students, girl students, be subjected to this kind of humiliation? The Dhanbad DC then met the parents and assured them that yes, there will be an investigation, because the principal is now claiming that she never made any such demand or she never ensured any such punishment. The Dhanbad DC is saying that after a probe, apt action will be taken. मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम गई है वहां पर जांच करने के लिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ के बच्चियाँ या पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है, उस आलोक में हम लोग पूरी टीम जांच करने के लिए पहुँचे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी निकल कर आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। Sohan's joining us on the phone line. Sohan, ये जो धनबाद के स्कूल में हुआ है कि एक प्रिंसिपल महोदया ने 16 साल की जो क्लास 10 की बच्चियां है उनको पनिशमेंट के तौर पे ये कहा कि आप अपना शर्ट उतारिए और सिर्फ ब्लेजर पहन के घर जाइए, क्योंकि आप पेन डे मना रही थी, क्योंकि आप एक दूसरे के शर्ट पे कुछ मैसेजेस लिख रही थी। अभी पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें एक्शन चाहिए। डीएम तक ये कह चुके हैं कि एक प्रोब होगा, लेकिन क्या ये केस पुलिस तक भी जाएगी? क्या कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये गवारा नहीं है, हम पुलिस तक जाएंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे? लेटेस्ट अपडेट आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, पेरेंट्स के शिकायत के बाद जो धनबाद के डीसी है उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच आने के बाद इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी। और डीसी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर जरूरत पड़ा तो एफआईआर भी किया जाएगा, लेकिन जो पेरेंट्स है वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरी घटना धनबाद में 9 जनवरी घटना हुई है, जहां एक निजी स्कूल में जो 9 जनवरी को पेन डे था और लड़कियां पेन डे मना रही थी और दूसरे के शर्ट पर विषय लिख रही थी। लेकिन जो घटना हुई है, लड़कियों ने बताया है कि घटना किस तरह हुई है। वहां पर इनके फोन को जब्त कर लिया गया था और इनके शर्ट को सीनियर जो लड़कियां हैं उनके द्वारा इनके शर्ट को वहां पर खुलवाया गया है और उनको ब्लेजर दिया गया है पहनने के लिए, और ब्लेजर से ही अपने वो घर गई है। और जब वो घर गई है तो उन्होंने इस पूरी बात की बने रहे हमारे साथ, क्योंकि there's outrage over this incident. We have Abha Singh joining us on the phone line. Good afternoon, Ms. Singh. I am sure you are as shocked as we are as we report this story for our viewers. There is a school, a private school in Dhanbad, where the principal, believe it or not, asked about 80 to 100 young girls to take off their shirt and go home only in their blazers because she was upset at them celebrating Pen Day, which involves students writing on each other's shirts, you know, something that they do playfully. This is the mindset we need to challenge. What's happening, Ms. Singh? I mean, one cannot believe that this can happen in a school in Dhanbad, and nobody has protested till now, and how these school authorities continue to be in position, because it is a gross violation of law. Under the IPC, it would have been an offence under 354, but as per the new BNS, it is an offence under section 74, which is assault or use of criminal force to outrage her modesty, making these girls, 80 girl students,
students remove their shirts and make them forcefully wear blazers. In fact, asking them to remove their shirt itself is an offense. Not only disrobing, it would come also under disrobing of the IPC, which would be a new BNS section. Also, since these girls are school going, they would be less than 18, I presume, and hence an offense under 16-year-old. POCSO should also be registered against the school authorities. Such behavior cannot be tolerated. These school authorities should not only be suspended, but they should be dismissed from service after due inquiry. But because on one hand we want girls to come to school for education, we say Beti Padhao, but here we are not protecting our girls, but we are asking them to remove their shirts just because on a pen day they are writing messages on shirts. Let me tell you, every school does that. Even when children leave their schools after the 10th, 12th, they have their shirts and t-shirts written by their friends as memories. Thank you, Ms. Singh. Very, very strong call to action here coming in. And I'm sure if you are watching this broadcast, you too must be seething. Ms. Brinda Adige is also joining us on the phone line. Good afternoon, Ms. Adige. There is a woman principal of a private school in Dhanbad in Jharkhand. She's today denying these allegations leveled by over 80 to 100 students, where she reportedly asked them to take off their shirts as a form of punishment because they were playfully marking Pen Day. What's the way forward, Ms. Adige? First and foremost, the principal needs to be pulled up. Whether she must be believed or not is secondary. We need to believe even that one child, one student who might come and complain. And we know that on the last day of exams, usually when the 10th standard students are all passing out of school, all of us write. From 40 years ago, I passed out and we have written on our shirts. We know it's more like a signature and things like that. If this particular principal does not know that this is almost a tradition and they are students, they are going to be wearing the shirt proudly for one day. She had the gall to say that you take off your shirts and only wear the blazer and go. That amounts to sexual harassment. It is nothing short of that. And that means she must be booked under POCSO, under Juvenile Justice Act, and disciplinary action must be taken against her, because this not only is very insulting and shameful and disgusting, but the mental stress that she has placed on the students just before their final exam. And here we are talking about 16-year-old girls, young girls, 10th standard students who had to be subjected to this kind of humiliation. Thank you, Ms. Adige, for joining us. There's also politics that's breaking out. We, for now, have Rajesh Thakur of the Congress Party joining us live, and so do we have Pratul Sadeo. Rajesh Thakur जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर क्लास 10 की बच्चियों के साथ प्रिंसिपल उनको ऐसा पनिशमेंट देती है जिनसे उनका पूरा डिग्निटी तार-तार हो जाता है, वो इतने ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे कि शायद इसके बाद शायद स्कूल ही ना आना चाहेंगे। पेरेंट्स कुछ एलिगेशंस लेवल कर रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि नहीं मैंने ये किया ही नहीं, डीएम कह रहे हैं हम प्रोब करेंगे, पर उन बच्चियों का क्या, who had to go through this kind of trauma? नहीं, देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसकी जांच होती है और ये दुखद घटना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन अब जो सारी बातें हुई हैं वो तो बात हुई है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की है और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कहीं देर ना हो जाए राजेश ठाकुर जी, क्योंकि इसमें हम मामला 16 साल की लड़कियों का है, 80 से 16 साल की 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट्स का है जिन्होंने ये एलिगेशंस किए, उनके पेरेंट्स तो एकदम शॉक्ड है। ये पेरेंट्स और टीचर्स। राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि Pratul Sadeo, BJP के, और Tanuj Khatri of the JMM. But Mr. Pratul, I want you to stay on the phone line because we have Tanuj Khatri of the JMM. Mr. Khatri, I'm sure you are aware because this has created outrage across the country. Your government is in power. Administration is saying we will initiate an investigation, but this is the mindset. Shouldn't this principal face action immediately pending inquiry? देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे छोटी बच्चियों से, छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और शिक्षा विभाग की टीम ने वो स्कूल का भी निरीक्षण किया है, वहाँ के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की है, सीसीटीवी फुटेज को भी उन्होंने अपने हवाले में लेने का काम किया है। और हम समझते हैं कि जी, माफी चाहती हूँ कि इंटरजेक्ट कर रही हूँ, माफी चाह रही हूँ इंटरजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि
एक ही सवाल पेरेंट्स पूछ रहे हैं और लोग भी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट एक्शन? आई अग्री दैट द अथॉरिटीज हैव टेकन नोट, लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया गया है? मैं वही बता रहा हूं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम एक्शन लेगी। कानून का इकबाल है झारखंड में, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है। किसी भी तरीके के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रतुल शाहदेव ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, द जेएमएम इज अश्योरिंग टुडे हेमंत सोरेन, आई बेग योर पार्डन, इज इन पावर। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। डू यू अग्री? This is one of the most shocking and disgusting incidents that has come to light in the recent times. Imagine the plight of those 15-year-old and 16-year-old girls, like they had to take off their shirts, according to media reports, in front of male teachers in the principal's office. And what was their fault? They were just signing each other's shirts as a souvenir. We have all done that during our school years. And this incident came to light on 9th January. And the district administration, there were 80 students who fell victim to this kind of incident. The parents went and met the deputy commissioner. Why has an FIR not been lodged? Why has the principal not been arrested? This amounts to a POSCO matter. When girls had to strip and go back home in inners and just their blazers after what happened in the principal's office. When the parents complained on 9th of January, and today happens to be 12th of January, in 72 hours, a committee has been formed. What committee are you talking about? They should have arrested the principal, taken strongest action. Right. POSCO, 15 years and 16 years, and mental counseling. What do you think should happen, Mr. Pratul? What do you think should happen? Because it's the state government which is saying that we will not allow any injustice. Let probe take place. For once, I hope and wish that the JMM government does something concrete. But this school belongs to a missionary school. And this government is very pally to missionary schools. But we have belief in the Chief Minister. We believe that the Chief Minister will uphold the dignity of these girls. But 72 hours have passed. The principal has not been arrested. 72 hours have passed and no FIR and no case has been filed yet. No action against the principal. That's the Bharatiya Janata Party's charge when the story from Jharkhand is leaving the entire country outraged. I'd like to thank all our political guests for joining us on the phone line. You're seeing what's happening, viewers. This is a story about young girls. They have been stripped of their dignity by their school principal. 72 hours have passed. No concrete action has been taken just yet. We have to take a short break. We'll be back with more news and updates. Stay with Times Now.